in a risk society. Beyond development, beyond any positive things, we have a lot of risks around us. And I think that's the precise reason that we have child safeguarding policy and we should have child safeguarding policy. But as far as policies are concerned, policies alone do not safeguard children. What safeguards children is the systems, the people, the community. So as I think since morning, right from the mouth of Honorable Chief Minister and other dignitaries, we have been hearing that policies alone or policies in black and white need to be translated. And particularly in the context of national education policy, unfortunately, to some extent, though we have discussed this policy for the last 5 years across the length and breadth of our country in our region, as Dr. Ritu Sarwan also talking about the Directorate of Education has also conducted many programs. Colleges, universities have discussed it. But to me, we have romanticized this policy to a large extent because we have restricted its understanding. It's not just a national education policy for education. It's basically for children who are on the path of their, discovery, life discovery. Through this policy, through this vision, children have to realize their life as a discovery. They have to discover their and unfold their potential. So in that context, when it comes to risk society, I wanted to highlight that safeguarding is important and children are being pressured from all the corners. As the chairperson of the previous panel was saying, it is the teacher and the student who are being pressurized from all the corners that they have to perform at every level. Yes, that is true. The performance pressure is there, but I think something enabling institutions, the systems, and taking this policy, decentralizing this policy from education to the overall child's well-being and health. That's what makes very important. And as I said, safeguarding must be an everyday culture. It's not a one-day event. It has to be the everyday culture where every adult owns the system, owns the child. And as was emphasized by some of the panelists, that every child is unique in its own way. Unfortunately, we have categorized, we have homogenized childhood and children. So we do in social sciences emphasize that all children are unique and every child is different. So as a teacher, I have to understand if I have 40 students in a classroom, every child is different in its own way, and every child, because he or she does not only belong to a classroom, he or she belongs to a family, a community, a neighborhood, and that is why this child safeguarding policy has to be taken beyond schools into the communities. As Dr. Ritu in one of the videos said, it takes a village to raise a child. So that's why I think national education policy has that mandate and has clearly demarcated its mandate in its policy. Yeah. Thank you, sir. Actually, we are talking about this child protection policy. It also mentions or have a mention of preventive measures and then reporting mechanism. So here we have with us Dr. Karen Nissam. Ma'am, since you belong to Child Protection Society, we want to know how your society ensures these rights to children who are in our schools or who are outside school. Then we'd also like to know the types of cases you are dealing with. Then who is the concerned authority to whom concerns should be reported? Because in this gallery, in this auditorium, we have a lot of school heads, we have a lot of teachers. We should know what is the kind of mechanism that is being put in place for children vis-a-vis this child protection. Assalamu alaikum, and thank you so much for the organizers for inviting me as a panelist to talk about the safeguarding and the child protection issues in our society. Mission Vatsalya, or the State Child Protection Society, is actually an umbrella or a roadmap to achieve the development and the protection of child rights priorities. ये जो हमारा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी है, it caters the two categories of children. The first category is the children in conflict with law, and the second category of children is the children in need of care and protection
जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं सवेरे से। तो अलग अलग तरह की सर्विसेज दी जा रही है और एज पर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जितने भी स्ट्रक्चर्स एनविसेज प्रोवाइड किए गए हैं हमारे एक्ट में और हमारे यूटी में वो सारे स्ट्रक्चर्स इन प्लेस है। Like we have juvenile justice boards in all the 20 districts. Child welfare committees are there in 20 districts to cater the children in need of care and protection. And the continuous monitoring system is there at the district level, village level and the block level. हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल की कुछ कमिटीज हमने बनाई हुई है जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रही है स्कूल्स के ऊपर और जो टाइमली इंटरवेंशन किया जा रहा है। और हमारा जो मैंडेट है मेरे सामने, उनमें से कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे आप किसी भी बच्चे के डेविएंट बिहेवियर की वजह से आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, आप उसको एक्सपेल कर रहे हैं, आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसे केसेस डील किए हैं मैंने। अब आपको आम अब्यूजेस लग रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, लेकिन कभी शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे उनको स्टिग्मेटाइज और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस को हमने डील किया है। थैंक यू। थैंक यू मैम। चूँकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो कॉर्पोरेट पनिशमेंट या कोई भी ऐसा अब्यूज़ हमारे स्कूल्स में इस वक्त या कहीं भी देखा जाता है तो उसका कंप्लीट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कैसा है और क्या रिपोर्ट करना, क्या वो टीचर्स वहाँ पे इनकरेज करते हैं वो रिपोर्ट या नहीं। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू नो बिकॉज जहाँ तक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात है, जहाँ तक मुझे याद है पहले भी ये हुई थी। दिस हैड अर्लियर आल्सो केम टू द डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। देन मुझे याद है कि तब इसके नोडल ऑफिसर्स भी थे, हर जोन में थे। इसका एक डायरेक्टरेट पर भी नोडल ऑफिसर हुआ करता था जो डे टू डे बेसिस पर ऐसे सारे केसेस देखते थे। तो उसमें रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बहुत स्मूथ था और डे टू डे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस पोडियम से हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको थोड़ा रिज्यूमेट करना है बिकॉज वी नीड टू सी बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे जैसे आपने कहा, जावेद साहब ने कहा कि जो ये बच्चों का मेंटल हेल्थ है, एट द एंड ऑफ द डे इट अफेक्ट्स देयर लर्निंग। जो हम बात करते हैं कि क्लासरूम में लर्निंग आउटकम्स बच्चे के या क्लास में उसकी परफॉर्मेंस, अगर वो उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर ये कहीं से शांत है, डिप्रेस्ड है, तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे साथ शिल्पी साहब बैठे हैं, हु इज हेड ऑफ बाल रक्षा वर्ग चेन के, तो उनसे हम बिल्कुल ब्रीफली इसके बारे में जो कि जो जावेद साहब ने बात की, जो मैम डॉक्टर कैरोलिसा ने बात की, उस पर 2 मिनट। सबसे पहले तो मैं हमारे डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर साहब और पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और साथ में हमारे जहूर साहब भी बैठे हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का जब डिज़ाइन कर रहे थे तो ये सब पीओ तो वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो थोड़ा सा चाइल्ड प्रोटेक्शन को थोड़ा सा सीरियसनेस के हिसाब से देखने की ज़रूरत है। हमें आफत वहाँ आ जाता है जब हमारे पास केस आ जाता है, चाहे ऑनलाइन केस हो चाहे जो भी चीज़ केस आते हैं। तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बना क्यों, किस लिए बना? उस समय जब हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बना था उस समय तो इसीलिए हमारा जैसे एक कोऑर्डिनेशन था कि कोई भी केस आते हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डायरेक्ट सेक्शन जो लीड पर्सन जो वो लीड करते थे, उसके बाद हमारा डिविजनल लेवल पे हमारा डिविजनल नोडल पर्सन था, उसी तरह सेक्टर पे सेक्रेटरी खुद उस पे लीड करते थे ताकि हमारे पास। और आप लोगों को याद होगा कि बहुत टीचर को भी सस्पेंड किया गया, इवन की सीओ तक भी सस्पेंड हुआ है क्योंकि क्राइसिस बहुत क्राइसिस हुआ है। क्योंकि जब ट्रेनिंग देते हैं लोग सेंसिटाइज होते हैं, अवेयरनेस हो जाता है। रिपोर्टिंग मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले डिपार्टमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा कि रिपोर्टिंग तो हो रहा है और दूसरे स्टेट में तो रिपोर्टिंग भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी मैं कमेटी मेंबर में हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के, केस बहुत आता है, ये नहीं कि केस नहीं आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बना हुआ है, स्टेट लेवल पे कमेटी हमारे पास है, डिविजनल लेवल पे। तो रिपोर्टिंग हमारे पास आईसी जो कमेटी है उसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन का केस आता है, 90% केस चाइल्ड प्रोटेक्शन के केस आता है। तो ये हमारे पास, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो ना वो बच्चों की सेफगार्ड के लिए नहीं है,
डिपार्टमेंट के सेफ गार्डिंग के लिए वो हमें समझने के लिए। अभी हमारे यहाँ पर लेबर का भी बैठा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि एनी डिपार्टमेंट जो किसी बच्चे के कॉन्टेक्ट में आता है उनके पास चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई चीज हादसा आपके स्टाफ या हमारे स्टाफ ने किया। क्योंकि मैं एग्जाम्पल बता दूंगा सेफ चिल्ड्रन कंपनी का। हमारे रिलीफ में किसी के रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे वहां पर वायलेंस हुआ है, एब्यूज हुआ, तब जाके ये सेफ द चिल्ड्रन को मजबूर हो गया कि चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी होना है, क्योंकि कहीं पर भी हो सकता है। तो कहीं पर भी जैसे हम एनजीओ को कहते हैं, जो बच्चे के साथ कांटेक्ट में आता है चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी मस्ट है। यानी कि उसमें चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी में 4 या 5 चीज बहुत प्रिंसिपल किया है कि सबसे पहले उसको ये मालूम हो कि भाई मेरे बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। फिर दूसरा बात होता है कि क्या मैंने उन चाइल्ड सेफ गार्डिंग के 5 पे मैंने समझा, साइन किया। उसके बाद तीसरा आता है कि आपके स्कूल में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वेंडर्स आता है, क्या वेंडर जो है उन्होंने हरासमेंट की गया स्कूल में। तो मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, क्योंकि मेरे चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी बना था, तो हमारे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए थे, तो हमने उनको बोला था कि ये सारे है, और उसी समय मैंने उनके यहाँ किया था अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है अक्रॉस इंडिया में मैंडेटरी है, नॉट ओनली इन JNK के। शुरुआत JNK से हुआ, नाउ इट्स इंडिया। अब एक तो ये हो गया। उसी समय मैंने IG के साथ पुलिस ट्रेनिंग चला था, रियान जो दिल्ली में जो केस हुआ था। मैंने कहा था काश ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ गार्डिंग होता है तो बस में या किसी चीज में गया तो ट्रेन उनकी सारी चीज बस में क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो चाइल्ड सेफ गार्डिंग को बचाते हैं। अभी ऑनलाइन आपके पास सबसे ज्यादा हमारे पास अभी केसेस ऑनलाइन आ रहा है। ऑनलाइन केसेस हमारे डिपार्टमेंट में ज्यादा है, चाहे मोबाइल से कर रहा है, चाहे वो ऑडियो पे कर रहा है, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रहा है, फेक रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। अब ये समझ लीजिए फेक रिकॉर्डिंग भी आता है, एक्चुअल भी आ रहा है। तो ये नहीं कि डिपार्टमेंट इन पे काम नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कुपवाड़ा, टंडा, गुरेज में अगर केसेस होते हैं, उनको यहाँ तक आने में उनका जो जस्टिस मिलने में काफी टाइम लगता है। तो वो टाइम को कैसे मिनिमाइज करें और सिस्टम इन प्लेस। तो अभी मिशन वात्सल्य आया हुआ है, तो इनका तो मतलब किसी भी जगह किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ वो कर सकता है। इनका जो जिसको हम कहते हैं कि हर, क्योंकि जुनाइड जस्टिस एक सुपरसीड करता है सारे एक्ट को। तो अगर किसी चाइल्ड का वायलेशन होता है तो मिशन वात्सल्य उसके अगेंस्ट एक्शन सीरियस से सीरियस एक्शन ले सकते हैं। मगर हमें इस पे सीरियस, अभी डॉक्टर साहब ने, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सेक्रेटरी साहब को कि गवर्नमेंट में तो थोड़ा बहुत हम बचा सकते हैं, पर प्राइवेट स्कूल में क्या है, वहाँ सीरियस ड्रग्स का इश्यू चल रहा है, बहुत सी चीज़ चल रहा है। तो हमें यहाँ पर कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट यहाँ से जाना चाहिए सेक्रेटरी साहब का कि एक जियो ऑर्डर क्लियर चला जाए सारे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कि चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी शुड बी पार्ट एंड पार्सल इम्प्लीमेंट होना चाहिए विद स्पीड। क्योंकि मुझे अपने बेटे से डर लगता है, क्योंकि वो डिटेल में जाता है कि हम जावेद के साथ, जावेद का बच्चा भी जाता है, हम दोनों बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। उसी तरह बाकी स्कूलों में भी आप किसी भी स्कूल का नाम ले लीजिए, हाईलाइट में हर स्कूल है। आप ये नहीं कह सकते ये स्कूल किसी चीज़ से बचा हुआ, चाहे वो ड्रग हो, चाहे एब्यूज हो, चाहे प्रॉपर पनिशमेंट से हो, हर चीज़ से हो। ट्रॉमा तो बच्चों पे जा रहा है, तो किसी ट्रॉमा को बचाने के लिए सिस्टम में स्ट्रक्चर प्लेस होना जरूरी है। Thank you, Chief sir. So, we need to put it this system once again because this is very important. चूँकि हमारे साथ एक चाइल्ड चैंपियन, हमारे साथ एक बेटी भी है, उसका चूँकि basically we are talking about children, we are talking about them only. So if we are talking about them, they should be the part of the decision and they should be part of the decision also. So बेटा we need आपके comments हमें चाहिए इस बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं इस वक्त regarding child protection policy. सर देखिए, जो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी है। ये हमारे लिए ही बनाई गई है ताकि किसी बच्चे के साथ किसी तरीके का, चाहे वो जिस्मानी हो, जहनी हो, किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल, मेंटल या फिजिकल एब्यूज़ ना हो। लेकिन अगर हम स्कूल्स की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो दूर दराज के स्कूल्स है वहाँ पे अभी भी बच्चों के साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं होता है, क्योंकि ये बनाई गई है इसलिए ताकि एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो अच्छा हो। एक टीचर एक स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, वो उसका मोटिवेशनल स्पीकर बने। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो अभी तक
मैं एक चाइल्ड चैंपियन हूँ, मैं एक खुद का प्रोजेक्ट चला रही हूँ। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो उसका मतलब यही है ना कि वो मेरे टीचर्स ने मुझे यहाँ पे भेजा, जब उन्होंने मुझे मदद की, जब DRP ने मुझे हेल्प किया, तब मैं यहाँ पे हूँ, तब मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह इससे हर एक बच्चा इसके बारे में जाने कि उसके राइट्स क्या है, उसके मतलब उसको एक टीचर के साथ, एक टीचर को स्टूडेंट के साथ कैसे रहना है, वो ये डर के ना हो। एक स्टूडेंट एक टीचर के साथ डर के बात ना करे, उसको क्वेश्चन पूछना होता है तो एक स्टूडेंट डरता है कि अगर मैं सर से बोलूँगा कहीं वो मुझे डांट ना दे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। क्योंकि टीचर्स मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि टीचर्स उनको डांटते हैं, लेकिन बच्चे डरते हैं कि मैं कैसे बोलूँ। मैं चाहती हूँ कि वो नहीं हो। जब चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी है तो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। एक टीचर जैसे मैम, मेरी टीचर वहीं पे बैठी है मेरे सामने इस वक्त, जब मैं क्लास में होती हूँ तो वो मुझे नाम से नहीं बताती, वो मुझे बोलती है डॉक्टर ईशा, क्योंकि उसको पता है मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का। बच्चों एक मतलब मैं दोनों का जस्ट करना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, तो वो मुझे हमेशा बुलाती है डॉक्टर ईशा, तो उसकी वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं सोचती नहीं, जब मेरी टीचर ने मुझे कहा तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उससे मुझे और एनकरेजमेंट मिलती है। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा सेफली और इसी तरीके से हर एक बच्चे में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एक टीचर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, न कि वो डरे एक टीचर को अपनी बात बोलने से। इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर एक स्कूल में, हर एक बच्चा सेफ होना चाहिए, न कि वो उसके साथ किसी भी तरीके का खतरा हो, चाहे वो जिस्मानी हो, जहनी हो या कोई किसी भी तरीके का हो। इंशा हम चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हमारे स्कूल्स में हैं वो आपकी तरह बोले, आपकी तरह अवेयर हैं, और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को आम करें, इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन होती क्या है, चाइल्ड राइट्स होते क्या है, कन्वेंशन के बारे में हम बात करें। सो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स। सो हमारी जो रेस्पेक्टेड होती है, हमारी चेयर जो है, हमारे सर जो है गुलाम हसन साहब, जो सेक्रेटरी चेयर के रोज हैं, वो कुछ कमेंट्स देना चाह रहे हैं, तो सर प्लीज। First of all, it is a privilege to sit among the galaxy of education professors and education officers. I really would love to be in such conferences and seminars, but due to our business in other organizational matters, one does not find normal time to join such conferences and events. About child safeguarding measures, I should say, because policy is nowhere written in the NEP about child safeguarding policy. I have not at least come across, because maybe it is there. These measures, child is actually central in National Education Policy 2020, because everything revolves around the child. In fact, every child is be all and end all of this NEP 2020. Ideally, child protection measures involve three things. One, infrastructure safeguards in a particular educational institution, school, like whether we have the proper boundary walls of the schools, whether we have safe drinking water, whether we have the clean toilet points, whether we have the safe grounds, because some of the schools in certain districts of our union territory, like Rajuri Punj, I have seen, they are in such a terrible condition, slowly just hanging, and it gives a very fierce look once you see even the institution itself. Second is this discrimination type of things sometimes happen in schools. Although in this part of India we have very rare such occasions on which some children are discriminated on the basis of caste, color, religion, community, birth, or gender. But still, sometimes, very rarely, such cases do come into into the notice. And what is important to prevent such cases is that there should be completely some safeguarding mechanism. First, every child who feels any kind of abuse, the child should feel encouraged to bring it to the notice of his teacher or her teacher.
and then there should be grievance redressal mechanism in place, so that if any child brings such instance to the notice of the institutional management, the management should act fast. Apart from that, what this Dr. Khairul Nisa was saying, we have already legal mechanism in place. There is no problem. We have a juvenile act under which child protection committee is there in every district. I have witnessed to that. I have worked in many districts, and they do take cognizance of such instances also. But what is more important is that there should be a teacher himself should be ideal person, because I have observed this maybe rightly or wrongly. I am of the opinion that even if suppose I am a little educated parent, he is an educated parent, but our own children don't listen to us. They listen more to their teachers, more to the lecturers. Even if so, what is important that our teachers, as they are, I am not saying God forbid they are not, but they have to be ideal, because about the child development, it is said that this ethics and other things, they are not to be taught. We go to mosques, we go to temples, we go to other religious places, but still we do the same thing wrong. We do commit mistakes, but there is something different. This character is to be taught, not to be taught. If every time we say, speak truth, speak truth, speak truth, but then why we find people liars? Because we don't have a modeling, ideal type of people, in whose company, if one sits for a small period of time, 10 minutes, half an hour, 1 hour, one gets impressed. One is awe-stricken by having seen such personality. So board on its spot has also played a little role. We have disaster management also, because we need to know that this is not protection in terms of discrimination only. It's protection in holistic sense. Like if there is a disaster, earthquake, fire, flood, avalanche, landslide, as has been happened in our Kishtwar and of late in this Kutwa districts. What to do? How to take protective measures? So board has also played its role. It has a very well-defined chapter on disaster management and measures that need to be taken to minimize and reduce the impact of the disasters. This apart, we have the great personalities, whether religious personalities or political religious personalities like Gandhiji and all that. And many things I believe that once we get some personality and his good things, his immaculate character, that is inherited on its own while we read his biography and all that. In the same fashion, we have Lalder. Lalder का कश्मीरी मुझे शायर बड़ा पसंद है. Many of you are, most of you are Kashmiri, and very few are, who may non-Kashmiri. That Goran Bunu Kunai Wasu. Goran Bunu Kunai Wasu. Never Bunu under Tasu. This is such a big cryptic sentence. If we unfold it, we need tons of books to unfold and unravel the mystery that she has explained in just a small sentence in Kashmir. So we should not be discouraged. Our younger generation, we are far more character-wise good. Although there are certain problems also, like drugs and all that. See, in terms of literacy also, if we see in 1947, the literacy was in India just 12%. Today we have 79%. And it is a matter of 1 or 2 decades or 1.5 decades, we will touch 100% and we will fix it all developed India, developed country. It's a matter of time only. We are moving in the right direction. Continuously since we were able to free our country from the clutches of the British Raj. With these words, Thank you, sir. thank you. These were inspiring words. We need such insight on this child protection. So very quickly, we'd have this round and then we'll go off because we have very little time. We will be followed up by one more discussion. Javed sir.
Dr. Javed, I know you have a long list of researches in your kitty vis-a-vis your own profession, especially I talk of child protection. So while this child protection policy or state government policy is implemented in schools, so what challenges do you find as per your research? And then what are the future steps and what will be recommendations? Can you very quickly? I will be very brief. I know, I think many of us are already aware of what are the different challenges. Maybe because our stakeholders do not have capacities, or even sometimes even awareness. They are not even aware. I guarantee that all teachers are not aware, all students are not aware of that we have a child protection policy, or we have discussion on that. But the point is, look, Sharif Saab and all of the panelists, and since morning we have been talking about child protection or education or national education policy. Look, I think we need to take some steps backwards in the sense we need to understand that 40% of our children, of our population is children. So, does it match the investment? How much of our GDP is invested in children or their childhoods or in education development? And I mean, if you go by the data, only I think 2.1% of union budget is spent on children, and that too very late. We actually missed the bus quite late. We spent too little, too late. In the sense, I think the formative stages or first 7 or 8 years are missed. So the point is, I think, one, as I said, awareness and capacities need to be built, and government needs to own education and the lives of children in their childhood, which means they have to invest heavily in the lives of children by increasing the investment. Look, other talks, speech will go, but until and unless we don't invest funds, then only we can actually reap the benefits. Surely, the best investment is the investment in education. I'll go quickly to Dr. Carol Nissa, ma'am. Ma'am, basically we just want a comment on way forward from your society, but I'll be specific here vis-a-vis the awareness that you people are doing in schools for this reporting mechanism, because we are all teachers and we understand that this part of the program, the reporting from schools, which is mostly discouraged in schools. I tell you very frankly, बहुत discouraged होता है, कोई रिपोर्ट नहीं कर पाता, उसको discourage सारे करते हैं, तो इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा हमारा एक वे फॉरवर्ड बता दीजिए। Honorable Supreme Court ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू कर चुके हैं जिस पे हर स्कूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है कि चाइल्ड राइट्स पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए स्कूल्स में, ताकि टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को भी पूरी तरीके से सेंसिटाइज किया जाए कि चाइल्ड राइट्स होते क्या है और रिपोर्टिंग कैसे होती है, प्रॉपर रिपोर्टिंग। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के बारे में मैं बता रही थी कि हमारी इंटरनल कमिटीज होना स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है फॉर अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन। जैसा कि हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया गया है क्लस्टर लेवल पे या हमारे स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि बच्चे और इसमें टीचर में एक अथॉरिटी में वो गैप ख़त्म कर दें ताकि बच्चा रिपोर्ट कर पाए अपने अब्यूज़ को कंसर्न अथॉरिटी के पास। हर एक जगह पे 1098 आप डिस्प्ले कर दें स्कूल्स में, ताकि स्कूल बसेस पे, कॉरिडोर्स में, हर दरवाजे पे ये नंबर आप इतना आम कर दीजिए ताकि हर बच्चा अपने अब्यूज़ की कहानी, अपने अब्यूज़ का रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाए। सीसी कैमरास इंस्टॉल किए जाए, क्योंकि हमने ऐसे भी सेक्सुअल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ केसेस स्कूल्स में देखे हैं जिनमें हमने या तो किसी कंप्लेंट या बहुत सारे केसेस में हमने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया कि मीडिया के जरिए, मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें पता चला कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में किसी भी तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर ने ही या किसी स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ ने ही किया है, बल्कि बच्चे ने बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया हुआ है। तो अक्सर जब मैंने जब हम इन केसेस का कॉग्निजेंस लेते हैं या इंक्वायरीज कंडक्ट करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि अगर स्टाफ के खिलाफ या किसी बच्चे के खिलाफ किसी भी किस्म का अब्यूज़ के चार्जेस लगे हुए हैं, लाइक परपेट्रेटर है या
बुलिंग कर रहा है स्कूल में या उसका डिविएंट बिहेवियर है, बट स्कूल वाले उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज करने की। फिर से मैं कहती हूँ, सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस लेने की ज़रूरत है, ताकि टीचर को भी पता चले, स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हमें कैसे रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग कितनी ज़रूरी है। जैसे बच्चों के साथ बात करते करते कभी कभार हमें ये लगता है कि वो नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाए, कि वो अब्यूज़ हो रहे होते हैं स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत है। जब भी कभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो तो उसमें टीचर्स का ही नहीं, बच्चों का ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स का होना भी उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अब्यूज़ के केसेस हमारे सामने आए हैं जहाँ पे हमने ये देखा कि पेरेंट्स बच्चे को आगे जाने पढ़ने नहीं दे रहे हैं, रिपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सफर है वो बच्चा है। और मेरी नज़र में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी में काम करने में, मैंने देखा कि आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास कोई केस आ रहा है किसी बच्चे का जो अब्यूज़ हुआ है, चाहे फिजिकली हुआ है, मेंटली हुआ है, सेक्सुअली हुआ है, या जिसको स्कूल में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जिसको स्कूल में नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो अगर टाइमली इंटरवेंशन अथॉरिटीज़ का ना हो, पेरेंट्स या टीचर्स या स्कूल अथॉरिटीज़ का ना हो, अल्टीमेटली वही बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बन जाता है। तो हमें लोग कहते हैं कि ये जो टीचर है ये नेशन बिल्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन रिपोर्टिंग की वजह से हम इसी बच्चे को इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बना रहे हैं। तो मे बी हमें ये बात नहीं समझ में आई होगी कि ये किन बच्चों के बारे में बात कर रही है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जब एक टाइमली केयर एंड प्रोटेक्शन बच्चे को नहीं मिले, जब टाइमली इंटरवेंशन बच्चे को सुधारने के लिए ना मिले, उसका डिविएंट बिहेवियर सुधारने के लिए नहीं मिले, तो वही बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इजीली बन जाता है और हम उसको क्रिमिनलिटी के लिए इंडल्ज करते हैं। थैंक यू मैम। एक्चुअली शहीद साहब, ये जो पैनल डिस्कशन इस वक्त यहाँ हो रहा है, इस पैनल डिस्कशन का एक फ्रूट तो ये है कि हमें एक अवेयरनेस मिल रही है सारे स्कूल हेड्स को या टीचर्स को जो भी यहाँ हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि पैनल डिस्कशन तभी हम फ्रूटफुल कह सकते हैं जब इसका कोई वे फॉर्म हो। तो चूँकि सेव द चिल्ड्रन, बाल रक्षा भारत, आपको इट इज़ अ मैंडेट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। सो आपके हिसाब से हम आगे आपका इसमें क्या रोल रहेगा कि कैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ या ICPS के साथ या बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाएं? सबसे पहले तो ये है कि क्या हमें सचमुच में जो सुसाइड हो रहा है क्या उसको बचाना है कि नहीं बचाना है। सिंपल, हमारे पास बहुत से सुसाइड के केस आए हुए हैं। हम यहाँ से अनंतनाग दौड़ के चला गया बच्चे के सुसाइड बचाने के, क्योंकि हमारे पास चिल्ड्रंस ग्रुप है, वो हमें इन्फॉर्म करता है बच्चा सुसाइड करने वाला है। और वो कहाँ से आ रहा है? या तो बुलिंग से आ रहा है, या टीचर के अब्यूज से आ रहा है, या पेरेंट के अब्यूज से आ रहा है। 3 चीज़ों से आ रहा है। अगर हमें सीरियसली इसको बचाना है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में सबसे पहला ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी से अकॉर्डिंग को डिपार्टमेंट उस पर एक जियो ऑर्डर निकाले और साइन करे। साइन मीन्स हर टीचर साइन करे सेफगार्डिंग पे, नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी चाइल्ड सेफगार्डिंग ऑडिट मैंडेटरी है, ये ऑडिट करवाना। क्योंकि आप एक चीज बताइए, जब आप इतने बच्चों के साथ काम करते हैं, चांसेस नहीं है क्या अब्यूज नहीं होने का? रिपोर्टिंग नहीं होता तो परेशान हो जाता है। पर इतने बच्चों के साथ काम कर रहे हम, रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। अभी आप अनंतनाग में हमने एक बार किया था, आप यकीन रखेंगे बहुत रिपोर्ट हो गया। सीओ साहब को कहा डरने की बात नहीं, अभी सबसे कम रेट अनंतनाग में है। इसका मतलब वहाँ अवेयरनेस बहुत हो चुका है। अब उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा आ रहा है। तो अब उसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो इस पे काम कर रहा है, तो बाकी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, लेबर डिपार्टमेंट, जो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, क्या उनको चाइल्ड सेफगार्डिंग की जरूरत नहीं है? अगर उनके साथ कोई केस आता है, आज तो सोशल मीडिया है, आपका एक भी केस नहीं बचता है, हाईलाइट होने में टाइम नहीं लगा। कितनी बार रिसेंटली हमारा वीडियो और ऑडियो हाईलाइट हुआ। और मैं ये कहूँगा कि डिपार्टमेंट ने कड़ी से कड़ी सजा भी दिया हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, मैं खुद कमेटी में था, सोच के बाहर की सजा दिया हुआ, जो हम सोच भी नहीं सकते कि फलाना टीचर को ये सजा मिलेगा। तो डिपार्टमेंट एक्शन लेते हैं, मगर एक चीज ये है कि इसका सिस्टमेटिक अप्रोच वो जरूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी हो, हर डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हो, और एक डिविजनल लेवल
डिवीजन डिपार्टमेंट का तो एक्शन लेगा लेगा, बट एट द सेम टाइम बहुत से केस पॉक्सो के केस होता है जो हमारे पास आता है। तो पॉक्सो के केस को जो है CWC जो है कोऑर्डिनेशन करके हम इसको काम कीजिए, क्योंकि इसमें 3 डिपार्टमेंट का बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक तो CWC जो एडमिशन वाला है, काउंसलिंग तो बहुत ज्यादा बच्चों का केसेस जो हमारे पास आ रहा है उसको काउंसलिंग के लिए हमारे पास काउंसलर बिल्कुल नहीं है। तो काउंसलर हमें हर डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे पेरेंट का काउंसलिंग हो, चाहे बच्चे का काउंसलिंग हो, चाहे हमारा जो प्रोफेसर जो जिसने किया हो वो भी प्रॉब्लम है। तो काउंसलिंग हर लेवल पे चाहिए कि हमारे पास ये चीज सेफ रहे। तो अल्टीमेटली हमारा क्या है, पहले हम कहता था कि स्कूल एज अ जोन ऑफ पीस, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा हटा दीजिए, विलेज एज अ जोन ऑफ पीस। आपको विलेज को सेफ करना है। विलेज में हर बच्चा कुत्ते से डरना नहीं चाहिए, घर से निकाल के स्कूल जाके कुत्ते से डरता है। फिर उसके बाद क्या क्या चीज अगर बच्चों से बैठ के लिस्ट करें ना, आप खुद बोलेंगे कि वो उसका जो लिस्ट देते हैं स्कूल आने से डर कितना लगता है, वो आपको लिस्ट थमा देंगे। तो टीचर से लेके कुत्ते से लेके आपके हर चीज से एक लिस्ट की जरूरत है। तो एक स्कूल जो है अपना एक कंप्लीट प्लान बना सकते हैं, बच्चे के लिए वो इजीली बना सकते हैं, जिसको हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कहते हैं। जस्ट अ माइनर एडिशन जैसे NEP डॉक्यूमेंट में ही ऑलरेडी कि क्लस्टर लेवल पे वी शुड हैव अ स्कूल सोशल वर्कर मैंडेटरी। आई थिंक इफ एक्शन पॉइंट्स विल बी ड्राफ्टेड, maybe They are being drafted. we need to incorporate such kind of professionals. We have to Yes, that's a task. Thank you, that's all. इंशा आप छोटा सा कुछ रिमार्क करना चाहेंगे? बिल्कुल छोटा सर, सा। मेरा लास्ट में ये कहना है कि हमें सिर्फ बच्चों को इसके बारे में सिर्फ बच्चों को ही अवेयर नहीं करना है, हमें पेरेंट्स को भी करना है। जैसे सर ने बोला कि पेरेंट्स भी कभी कभार बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है, कोई कम, उसको हमेशा बोलते हैं उसके बच्चे को दे। कश्मीर में आम बोलते नहीं थी, तो उससे भी एक बच्चे को मेंटली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि वो समझता है कि मैं किसी से कम हूँ। वो नहीं होना चाहिए। हमें टीचर्स के साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी इसमें अवेयर करना है, उनको बताना है कि चाइल्ड राइट्स क्या है, चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। I'll be giving you बस इसके बाद में आपको भी you will just wrap it up. Thank you. Actually हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट बैठी हुई हैं, she is joint director from SCRT Jammu, मैडम सिंधु कपूर। Can we have mic? जावेद सर mic दे दीजिए। We want an expert comment from मैडम सिंधु कपूर, please. Congratulations to DSC Kashmir for organizing this wonderful meet today and deliberating upon one very important aspect and area of school education, that is juvenile justice. Because as one of the experts over here, Dr. Carol Nisa, Chairperson, CWC Srinagar, has just said that Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 is very much in force in Jammu and Kashmir, and we are one of the rarest states areas in the country having 20 JJBs and 20 CWCs in all the districts. First of all, as an educationist, it is very important and pertinent for us to understand who is a juvenile. If we understand juvenile is a child between the age group of 0 to 18, that means the whole mandate of school education department actually comes under this very particular act. So as an educationist, it is very important for us how to proceed and how to incorporate the various dimensions of this act within the 4 walls of school education. Why so? Because it is very important for us to understand that NEP, as Sheikh Saab has said, NEP is talking about the holistic development, 360 degrees development of the child. And for that very purpose, NCF 22 and 23, both foundational and school education, they are talking about the school processes and school complexes in totality. Because we are all parents sitting over here, and we must understand the very fact
that in the present times, we do not want that our child should visit Mama, Chacha, Dada's house because we are not sure about the safety of his and her. Magar, see the level of confidence. Madam Nidhi was talking in the morning about the various things. The confidence of the parents in the community and the village who are sending their child to the school. So with the confidence that he and she will remain safe inside the school premises. So it is the duty of the school processes, school educational leader to actually first of all understand what is the role of juvenile justice inside. As Madam Therunisa has just said, because I am actually member representing as the selection committee member of juvenile justice since 2022. So I am very much aware of the fact, what facts and factual figures we are all talking about. In Jammu and Kashmir, if we are aware of the fact that we have more than 28,000 schools with more than 1.5 lakh students in place, India is the youngest population all around the world. We have many cases where we have students, children in conflict with law. They are undergoing various crimes, maybe of petty, serious and heinous nature. More so, where we have the situations and the events where the child needs care and protection. How come school comes into the picture? When the child enters the gate, uski toilet facility, especially for the girl child, drinking, right to have safe drinking water. And more importantly, which the point, I think only one point my worthy panelists have missed over here, awareness about POSH and POXO. Not only for the students and the parents, but for the principals, educational administrators and the teachers. We have many cases, we have registered such cases where our principals are not aware of the fact, they are not aware about the acts, how to respond, and even after superannuation, they are having their appearances in the various courts. So it is very important to actually understand that it is mandatory under the ruling of Honorable Supreme Court to have internal complaints committee in both the situations, vis-a-vis POXO, vis-a-vis POSH. ये बहुत जरूरी है जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर 15 से ज्यादा मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है. अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई इशू आता है, it comes like a flag on the educational administration. Second thing which I want to derive over here, apart from these cases, CWSN, no school can refuse admission to any child because of this very reason. And inclusivity is one of the pillars of NEP 2020. So, ये भी awareness होनी चाहिए, छोटा सा ही space हो, वो CWSN friendly होना जरूरी है, ऐसा special trained educator हर स्कूल के अंदर होना जरूरी है. नहीं है, हम सब लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कहीं ना कहीं उसको डेफर कर रहे हैं. Third important thing which I want to bring over here is that suggestion box for the children is very important. Many times they cannot come up with their real-time situation. Things may erupt because of the ill behavior of the teachers, of the NPS. We have to understand schools के पास हर तरह का employee होता है, teachers के साथ faculty, gazetted, non-gazetted and MTS. Students, especially girl child. So उसकी protection. Child rights and protection is a very specialized thing. It is an independent area in sphere. Uski awareness drives are very important. What madam you were talking about the C's. Two important C's I'll add over here. Convergence and collaboration between Social Welfare Department, Ministry of Tribal Affairs, because हमारे पास nomadic children भी हैं, to the tune of almost 38,000, and school education. इन तीनों की convergence होना बहुत जरूरी है,
because today Mission Vatsalya is one of the most important pillars and components for the welfare of children. Apart from that, we have Mission Poshan. Midday meals हमारे यहाँ serve होते हैं. Right to nutrition. So ये जो सारे हमारा एक gamut of laws है, ये laws हमारे teachers को पहले understand करना जरूरी है. And for that very purpose, now I'll come to my ultimate point. SCRT Jammu and Kashmir is alive to the situation, and regularly we are organizing various training programs, especially for heads of the institutions. Thank you, Chair. Thank you. Thank you so much. These were real words of expertise, I suppose. Maybe we may have missed some, but this is now a complete, I think, package, I can say, regarding this child protection. You want to come in because जस्ट एक मिनट में आपको बता देता हूँ. आप लोगों की नॉलेज में श्रीनगर में अक्रॉस कश्मीर डिवीजन में हमारा इंटरव्यू कमेटी मेंबर्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म किया हुआ है. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ऑर्डर्स भी है, और उनको बॉक्सों का ट्रेनिंग एक बार हुआ है सारे सीओ सुना के. ठीक, ये मैंने इसलिए कहा कि रिपोर्टिंग हो रहा है, बट बहुत सी चीज़ें रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है. रिपोर्टिंग का वेब मैकेनिज्म शायद बहुत से टीचर मतलब बहुत से लोगों को स्कूल लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है. नंबर 1 तो ये क्रिएट है. नंबर 2 जो है, क्योंकि मैं भी जो है जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड का सिलेक्शन का ओवरसाइट कमेटी का मेंबर हूँ लद्दाख में, लद्दाख में आते हैं. तो उसमें क्या है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस की बात हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट श्रीनगर और मिशन वात्सल्य के बीच में हमने स्कूल से ऑडिट पे हमने करवाया, स्कूल से ऑडिट पे करवाया और ज्वाइनिंग विजिट भी किया बहुत से स्कूल में, बट इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है. thank you, sir. So for the closing remarks, because we are already late, so as you are most respected chairperson, sir, please. Let's go closing remarks. As Madam Dr. Karunisa said rightly, that these incidents need to be reported. But once we report them, they should not be blown out of proportion. That has much larger repercussions than even concealing it. Sometimes what a small issue is blown out of proportion in such a manner that all believe, or you can just imagine the psyche of a child. That person had done this thing, nothing special happened, because otherwise the punishment is not so harsh for the crimes and offences committed by juveniles. So it has to be regulated, not blown out of proportions. And the proper mechanism, as the Madam Joint Director SERT said rightly, that there should be proper mechanism of reporting in every school. There could be that kind of slip for the improvement, or some teacher should be actually appointed the person who single point contact, so that this kind of thing, if it happens, he or she is to be contacted. Apart from that, we can have technological interventions also, like CCTV, and the head of the institution or headmaster, whatever name he is, he can occasionally or surprisingly check that everything within his premises in every classroom is going as per our acceptable norms. But as I said, I would like to reiterate it that still we are safer, both in Jammu and here in Kashmir division. We are safer because ours is a traditional society. It is modernizing fast. But I want that this modernization should go in every aspect, minus this our ethical development, because this our edifice of ethics is much stronger than rest of our country, much stronger. In Jammu and Kashmir, I have seen that I have seen more than half of my country, and the kind of compassion, I should say this proudly, the kind of ethical development we have in terms of compassion, sympathy, truthfulness, we are slightly better than rest of our countrymen. Maybe I am wrong, but this is my observation which I have practiced.
while visiting other states and union territories of my country. So we are safe in the hands of our teachers, who are being trained, whose skills are being upgraded every now and then through conferences, through smaller training modules. And we look forward that the kind of conferences Director of School Education Dr. Itu sir is organizing continuously over a period of now last 4-5 months. I am completely hopeful that our teachers are sharpening their talent, their skills, and our younger generation is safe in the hands of our teachers and lecturers. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you all panelists. Thank you very much. आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस हम जानते हैं कि हमें कट शॉर्ट करना पड़ रहा है। अब हम जल्दी से अपने तीसरे पैनल डिस्कशन की तरफ आते हैं और उसके लिए उसका थीम है एजुकेशन इन मदर टंग फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस द रोड अहेड। We are pleased to welcome chairperson of the panel discussion, Mr. Wahid Makhdoumi, Registrar IUST and a distinguished professional actively contributing to academics and technical forums, mentoring students and promoting innovations. Let us greet Mr. Wahid Makhdoumi. A huge round of applause. Ladies and gentlemen, please welcome the first panelist, Professor Shah Nizam, a celebrated Kashmiri scholar and a Sahitya Academy body. He was devoted decades to presenting Kashmiri literature, monitoring generations and promoting our linguistic heritage. Let us greet Professor Shah Nizam with his sounding applause. Joining us today, second panelist, Mr. Mohammed Sahab, President of Adabi Markaz Kamlas, and a distinguished playwright, writer, filmmaker, broadcaster, and a language activist. Over the past 4 decades, he has shaped Kashmiri theatre and literature, mentoring young talent and promoted the Kashmiri language and arts. We are honored to have him share his insights and vision with us. A warm round of applause for Mohammed Sahab. Joining us, third panelist, Mr. Sheikh Gulzar, Senior Academic Officer at SCRT Kashmir, with 29 years of experience in English teaching, curriculum development and teacher training. He is a national resource person for NCERT and leads data admission in Jammu and Kashmir. Let us give a hearty welcome to Mr. Sheikh Gulzar. Ladies and gentlemen, please welcome moderator of this panel discussion, Mr. Iftihar Imran, Academic Officer at Jammu and Kashmir Board of School Education with a Master's in English. He has contributed significantly to curriculum development and aligning JNK's education system to the national curriculum framework, promoting quality learning for future generations. Ladies and gentlemen, let's cheer and welcome Mr. Iftihar Imran. आप सभी का शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हैं। आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि अभी आप सेशन स्टार्ट ना करें और सबकी इजाज़त से हम यहाँ पर फेलिसिटेशन का सेशन करना चाहते हैं। तो पहले हम दावत